मैं अंकुल कुमार यादव आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को फार्माकोग्नोसी के रिवीजन करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं उसका पूरा एक्सप्लेन। द फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग्स from natural sources like plants, animals, minerals kingdom, or to acquire the knowledge or science of drug. The word pharmacognosy is derived from Greek word pharmakon means drug, gnosis means knowledge, drug natural या synthetic, natural nature synthetics chemical। तब आ गया द टर्म फार्माकोग्नोसी इन इटाली नोन एज मटेरिया मेडिका वाज इंट्रोड्यूस बाय C.S. सिडलर, a medical student in Halle, Germany in 1815. He wrote his doctoral thesis titled Analytica Pharmacognostica. फार्माकोग्नोस्टिका। तब आ गया डायोक्राइट्स, फादर ऑफ डायोक्राइट्स known as father of pharmacognosy, father of Indian pharmacognosy, Dr. Chandrakant Kokate. Hippocrates, universally recognized as the father of modern medicine. Sushruta is the father of surgery. Galen, the first Greek pharmacist who described the method of preparing drugs from natural. Galen is the first Greek pharmacist who described the method of preparing drugs from vegetable and animal origin and who gave many formulas. The scope of pharmacognosy: isolation of phytochemicals. Certain phytochemicals are derived from the plant, such as glycosides or digitalis leaves, alkaloids from the plants belladonna, राउल उल्फिया। तो दूसरा में आ गया बायोसिंथेटिक केमिकल्स, बायोसिंथेटिक्स pathways investigation. The pharmacognosy helps in the investigation of biosynthetic pathways of primary and secondary metabolites. The preparation of herbal formulation. तब आ गया फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द formation of certain herbal formulations like churans, leha, aristas, etc. The drug of direct therapeutic uses. For example, steroid, antibiotic, vincristine, etc. Formation of novel medicine. तो फॉर्मेशन ऑफ नोवेल मेडिसिन, तो इसका आ जाएगा तो द फॉर्मेशन ऑफ नोवेल मेडिसिन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ड्रग इज टोटली डिपेंडेड ऑन द फार्माकोग्नोसी। तब दूसरा आ गया क्रूड ड्रग्स किसे कहते हैं। तो क्रूड ड्रग में बी ड्राइव्ड फ्रॉम various natural sources like plants, animals, minerals, and microorganisms, etc. Due to their wide distribution, the arrangement of classification in a definite sequence is necessary to understand easily. तब दूसरा understand easily, तब आ गया classification of drug। तब आ गया नंबर 1 में आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा में मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो द क्रूड ड्रग्स
The crude drugs are arranged according to the alphabetical order by their English or Latin names. Some of the pharmacopoeias and reference books which classify the drugs according to this list are Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, etc. Advantage: Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, Extra Pharmacopoeia, International Pharmacopoeia. The advantage: it is a simple method in this system. Location tracing of drug is very easy. No confusion as entries cannot appear repeatedly. Scientific nature of drugs is not revealed by this system. Original sources of drugs is also not clear. This system does not show that which entries are new and which are old. For example, agar, benzoin, cinchona, distillace, ergot, phenol, ginger, quinoa, linseed, mustard, nutmeg, etc. अरे दोस्तों, फिर अगला आज बनाएंगे। ऐसा होगा तो फिर से आज रिवीजन करेंगे। और ये वीडियो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसा ही वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।